So in the previous lecture we have discussed second countable space. So let's recall the definition again here. Second countable space. Second So a topological space is second countable if it has a countable open base. That's the definition of second countable space. A topological space X with topology tau is said to be a second countable space, or is said to satisfy an axiom of second countability. Said to satisfy the axiom of second countability, or second countable space. See, if it has a countable, open base. सो इसके बाद हमने एक रिजल्ट किया था, दैट्स लिंडलॉफ्स थ्योरम। लिंडलॉफ्स थ्योरम में हमने ये बताया था कि अगर गिवन टोपोलॉजिकल स्पेस सेकंड काउंटेबल है, मतलब इसके पास काउंटेबल बेस है, फिर आप कोई भी ओपन सेट लीजिए, इफ दैट ओपन सेट इज a union of some open sets which may not be basic, but we can reduce that union. That union may be uncountable union, but we can always reduce that uncountable union to a countable union. That's Lindelof's theorem. और उसके बाद इसकी applications भी हमने देखी. Now what we do, we will see that every second countable space is a separable space. So separable means which has a dense subset, which is a countable dense subset. Okay, separable space. So that's our next theorem. Every second countable space is separable, is separable. Okay, proof. So let us take a topological space x tau. So let x tau be a second countable space. Be a second countable space. Second countable space. Okay. So then we can take a countable open base and let b, which is equal to b1, b2, b. Let this be beats open base. Beats open base. Okay. Right. So it has a countable. Beats a countable open base. Okay. So let's write it precisely here. Beats countable open base. So we need to show that this is separable. Separable means it has a countable. It's a countable dense subset. So जो हम उस काउंटेबल सबसेट को कैसे कंस्ट्रक्ट करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है. तो उसका रिलेशन क्या होगा इसके साथ, काउंटेबल बेस के साथ. So it looks that we should select one point from each basic open set. So this B1 is basic open set, B2 is basic, they're all basic open sets. We select one point from each basic open set, then that set is a subset of X and it's also a countable subset. And finally we'll see that countable subset is actually dense in X. Okay, so let's define this set. Let A be equal to this set xi such that xi belongs to bi
where one this I is greater or equal to 1. Okay, so obviously this is countable because we have countably many bi's, so and we select one point from each bi, so that means this is a countable subset of x. Then this a, it is a countable subset, it's a countable subset of x. So we show that this is dense in x. We show that a is dense in x. Okay, that is in other words, it means that we show that a closure is equal to x, right? So one thing is clear, that this A closure is always subset of x, because this x is a given space, so everything is subset of x here. So A closure is subset of x. So we had to prove the other inclusion. That means we had to prove that every point of x is in A closure. So let's choose any point in x. So let x be a point of x. We show that x belongs to A closure. Okay, for if x is not in A closure, let's put like this. For if x is not in A closure, it means that x is not in A, and there is an open set containing A, and that open set is disjoint from containing x, and that open set is disjoint from A. Okay, so then x is not in A, then x is not in A, and there exists an open set O, which is obviously in tau. Okay, because tau is the class of all open sets here, such that O intersection A is the empty set. Is this okay? This step. Okay, there is an open set O such that this x belongs to O, and this, अब देखिए मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है, वहाँ पर ओपन स्फीयर्स होती है विद सेंटर एट एक्स, एंड अब अगर ये सपोज अगर x इस ए क्लोजर में होता, उस केस में क्या होता, x या तो ए में होता, या जो भी आप ओपन सेट लेते या ओपन नेबरहुड ऑफ x लेते, दैट मस्ट इंटरसेक्ट ए. मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है, एनी ओपन स्फीयर विद सेंटर एट x इंटरसेक्ट्स विद ए. अब यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेसेस में ओपन स्फीयर्स तो नहीं है, बट हियर वी हैव ओपन सेट्स ओनली. So we say that अगर ये इसमें होता, अगर ये ए क्लोजर में होता, उसका मतलब क्या था, उसका मतलब तो ये था x या तो ए में है, या ऐसा है कि हर कोई ओपन सेट, जो भी ओपन सेट आप लोगे कंटेनिंग x मस्ट इंटरसेक्ट. ओके, तो ये आपने टोपोलॉजिकल स्पेस का जो है ना थर्ड यूनिट है, वहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया होगा, ए क्लोजर, या यू कैन सी इट फ्रॉम GF Simmons, वहाँ से भी आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं. सो दिस इज ट्रू, O इंटरसेक्शन A इज द एम्प्टी सेट. ओके, नाउ since this set B, which is equal to B1, B2, so on and so forth, is an open base, ये open base है, and O is an open set, O open set है containing X. So by definition
बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन बेस, ओके, मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा ऑफ ओपन बेस, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन बेस, तो यहाँ पर इसको मैं मेंशन करूंगा प्रीसेट बाय ओपन बेस, देयर एग्जिस्ट सम, देयर एग्जिस्ट bk such that this x it is in bk and bk is subset of o. So therefore x bk में है, okay, therefore x is also in x is in bk and bk is subset of o. So that means every point of bk is contained in o, every point of bk is contained in o. So what does it mean? Let's sit here first. bk का हर कोई पॉइंट जो है ना वो o में है, ओके, bk का हर कोई पॉइंट o में है, bk is subset of o and this a contains, okay, let's put it like this, also this what's this a कौन सा सेट है, what's this a is x1 x2 where these are in pi's, so we can say this xk जो होगा वो bk में होगा, so xk जो है वो a में भी है और bk में भी है, राइट, xk also xk belongs to bk intersection a, क्योंकि x के एक्चुअली bk का पॉइंट है, मगर a हमने वो सेट लिया जिसमें हमने हर किसी bi से एक एक पॉइंट लिया, b1 से मैंने x1 लिया जो मैंने a में लिया, b2 से मैंने x2 लिया जो मैंने a में लिया, so x के जो पॉइंट है ये a में भी है और bk में भी है, but what is bk? bk is subset of o, it is subset of o intersection a. So that means we have this intersection which is not, it contains at least one point, which means that o intersection a is non-empty, which is a contradiction, okay. So therefore x must be in a closure and hence a closure is equal to x as the required. Okay, now what's the converse of this theorem? इसका अगर आप converse देखना चाहोगे, what will be the converse of this theorem? What it states? It states that every second countable topological space is separable. So converse is this: every separable topological space should be second countable. But converse is not true in general. So we have a separable topological space which is not second countable. But this converse it holds in matrix spaces. मैट्रिक्स स्पेस में कन्वर्स होल्ड, मतलब अगर आपके पास सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस होगा देन दैट सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस मस्ट बी सेकंड काउंटेबल. सो the converse of the above theorem does not hold in topological spaces. But it holds in matrix space. Matrix spaces. So that's our next theorem. So what's next theorem? Every separable matrix space is second countable. Every separable
matrix space is second countable. Every separable. Okay, तो एक्चुअली यहाँ पर प्रिसाइजली एक्चुअली यूज़ क्या हो रहा है, मतलब इसमें जो मेन चीज़ यूज़ हो रही है दैट्स बिकॉज इन मैट्रिक्स वी आर डीलिंग विद स्फीयर्स. ओके, स्फीयर्स का जो रेडियस होता है वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर होता है, और वो जो पॉजिटिव रियल नंबर्स है दैट पॉजिटिव रियल नंबर्स उसमें क्या होता है कि उसमें जो रैशनल होते हैं ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, दे आर डेंस इन पॉजिटिव रियल नंबर एंड द पॉजिटिव रैशनल नंबर दे आर आल्सो काउंटेबल. तो वो मेन चीज़ इसमें यूज़ हो रही है, डेंसनेस ऑफ रैशनल्स इन रियल नंबर्स. एक तो ओपन स्फीयर्स mainly deals with the positive real numbers, and the set of positive rational numbers is countable in set of positive real numbers. So that's the main thing which we are going to use here. In fact, we are also using we'll also use this separability that we are also going to use. बट अब डिफरेंस क्या है टोपोलॉजिकल स्पेस में यूज ये कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है. वहाँ पर मेन ये है कि वहाँ पर आपके पास ओपन स्फीयर्स नहीं है. तो यहाँ पर प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि आपके पास ओपन स्फीयर्स है, और उन ओपन स्फीयर्स को आप अप्रॉक्सीमेट कैन अप्रॉक्सीमेट द ओपन स्फीयर्स विद रैशनल रेडियस एक्चुअली, एंड रैशनल्स आर काउंटेबल. So let's prove this theorem. So let x be a separable matrix space. Let xd be a separable matrix space. Okay, so then by definition it is a countable dense subset, and let A be a countable dense subset of X. So that's this. A closure is equal to X. ये इसके बराबर. A countable है और ये इसके बराबर है. Okay. So let's define this A precisely because we can enumerate its points. So let's write it as this: A1, A2, A3. It's a countable set. Okay. Let's take this as A is equal to this set. Okay. Now since it's dense in X, so now for each epsilon positive, for each epsilon positive, there exists a point A in capital A such that, which is countable set, such that it's dense. Okay, it's dense. So A closure is X, so that means every point is a limit point of X. So in other words, which means that if I take any sphere with center at for each epsilon positive, for each X in A and for each epsilon positive, one minute, how do I state it? So this is given A closure is X. So if I choose X in A, X in X, then X is in A closure. So that means X is either in A, or X is the center of some sphere which intersects with A. X is the center of some sphere. No. Then every sphere with center at X must intersect with. So let's write it like this. Let's state it like this.
is, let's see it like this. So x and x. So we have this, a closure is equal to x. Okay, this is, so if I choose any point x in a, so then x is in a closure. So if I choose then any, then so if x is in x, then for all epsilon positive, this thing will happen. S or x intersection a minus this point, obviously minus x, this must intersect. Okay, or equivalently I can say or for all epsilon positive, there exists some point a in a, so let me write it in terms of metric. Okay, distance between x and a is less than epsilon. So this intersection is non-empty, it means it contains some point say a, which is also in this capital N and in the sphere. So वही point a मैंने यहाँ पर choose किया. Okay, a is in a such that distance between x and a is less than epsilon. So name it star because we'll use this. Okay, so I want to construct a countable open base actually. मुझे एक countable open base चाहिए. Okay, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है काउंटेबल डेंस सबसेट. अब मुझे मुझे एक काउंटेबल ओपन बेस चाहिए. दैट मीन्स आई वांट टू फाइंड द काउंटेबल फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स. सो लेट्स डू दैट. लेट्स डिफाइन दिस b which is equal to s or a. Okay, but if I run this r over a real number, then obviously this class will be uncountable class because the real numbers are uncountable. And if I restrict this radius, if I choose this radius to be a rational number and a to be a point of capital A, both are countable set of rational numbers is a countable set. The set A, which is also a countable set, then this will be a countable family. So I will write this. R is a rational number. R is a rational number. And A belongs to capital A. Okay. Then this B is a countable family of open sets. In fact, they are open spheres obviously. So every open sphere is an open set. So this is a countable countable family of open sets. This is a countable family of open sets. Okay, so we'll see that this family is an open base. So we show that this B is an open base for x. Okay, तो अगर मैंने प्रूव किया B ओपन बेस है x के लिए, ये काउंटेबल भी है, तो अब x के पास एक काउंटेबल ओपन बेस आ गई एंड दैट मींस x विल बी अ सेकंड काउंटेबल स्पेस. उसको मैं कैसे प्रूव करूंगा? मैं कोई भी ओपन सेट लूंगा एंड आई विल शो एंड देन आई चूज एनी पॉइंट इन दैट ओपन सेट, then I will find an open sphere in this B such that x belongs to that open sphere and that open sphere is contained in the open set G. So let G be any open set. Let G be any non-empty open set in X and X belongs to G. We show that there exists
some member इन कर्सिव भी, हम प्रूव करेंगे कोई मेंबर होगा कर्सिव बी में, फिर सम मेंबर इन कर्सिव बी विच कंटेन्स एक्स, जो एक्स को कंटेन करे, which contains x and contained in G and contained in G. Okay, so G open set है और x G में है, so that x is an interior point. Now let's take a real number. Let R be a positive real number, positive real number, such that S or X is contained in G. Okay, S or X is contained in G. Now we consider the concentric open sphere with same center but radius is one third of this r, that is r by 3. Okay, and consider the concentric open sphere, open sphere. Okay, open sphere S r by 3x. Okay, concentric means जिसका सेंटर सेम होगा, बस रेडियस हम कम करते हैं उसका, concentric open sphere with 1/3 its radius, with 1/3 its radius. Okay, okay, so r by 3 आपने चूज किया. अब आपके पास दो चीजें हैं. एक तो आपके पास ये है कि a डेंस है x में, a क्लोजर इज इक्वल टू x, राइट, a क्लोजर, और आपके पास एक पॉइंट x आपने x में लिया, और आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है r by 3. तो ये आपके पास है. Now what you can do, so by स्टार जो हमने वहाँ पर डिफाइन किया था, देखिए स्टार में हमने क्या लिखा था, स्टार में हमने ये कहा था कि अगर x x में है, then for every epsilon positive there is a point A in capital A such that distance between x and A is less than epsilon. So that means that epsilon positive number is r by 3 there. So and so I can select a point A in capital A such that distance between x and A is less than epsilon. Okay, so let's write it here by star there exists A in A such that distance between x and A is less than epsilon. Epsilon is r by 3 here. Okay, so in other words this A in other words the point A, it belongs to the sphere with radius r by 3 and center x. Okay, in other words this A, which is a point of A, capital A, and it's also in S r by 3x. Again we have this r by 3 is less than r, so there are two real numbers, positive real numbers, so we can choose the rational number between these two real numbers. So let r1 be a rational number, be a rational number such that r by 3 less than r1 less than r. Okay,
अगर हमने ऐसा रैशनल नंबर चूज किया, देन वी कैन सी दिस x is obviously it's in s r1 by 3. Okay, r1 it's s r1 of a, and this is contained in srx, and which is contained in G. So this one, so clearly this sphere ये जो आपके पास ये sphere है SR1 of A, it is in cursive B, because इसका जो सेंटर है वो कैपिटल A का पॉइंट है और इसका जो रेडियस है वो रैशनल नंबर है. So thus for any open set G and any point x in G, I can select an open set or an open sphere in cursive B such that x is in that open sphere and this open sphere is contained in G. बस अब आपको ये एक्चुअली वेरीफाई करना है क्या. ये तो देखिए SR1A इट शुड बी कंटेन्ड इन SRX. आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर हम इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं. इट्स लेट्स टेक दिस टू बी एन ओपन सेट. ओके, let's take this whole page as a matrix for x, and this is an open set G which is subset of x. So we have selected a point x in this G. Since G is open, so then there is an open sphere. So this is an open sphere, say this is an open sphere. This is an open sphere. Okay, so this is our open sphere जिसका रेडियस हमने r लिया. ओके, its radius is r, राइट. तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने कंसेंट्रिक ओपन स्फीयर लिया इसके अंदर. अब मैं इसी का रेडियस r/3 लूंगा और जो बिगर स्फीयर है दैट आई विल सिलेक्ट चूज हियर दिस वन. दिस इज द ओपन स्फीयर. ओके, जिसका रेडियस हमने r चूज किया. ओके, इसका रेडियस r है. दिस इज द बिगर ओपन स्फीयर. ओके, इसका रेडियस ये है SR/3x और ये जो है ना दिस इज SRX. अब इसके बाद मैंने पॉइंट, अब आपके पास r/3 है और x है पॉइंट. सो आपने फिर एक पॉइंट चूज किया A इस स्फीयर में, पॉइंट A जो कि A में भी. ओके, ये पॉइंट आपने चूज किया. ठीक, फिर इसके बाद आपने क्या किया, आपने एक रैशनल नंबर चूज किया बिटवीन r/3 एंड r. वो आपने ये स्फीयर लिया जिसका सेंटर आपने A चूज किया, A लिया आपने. तो इस तरह से आपने किया. दिस इज इसका जो रेडियस है वो आपने r1 लिया. ओके, r1 से रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन r/3 एंड r. और ये आपने वेरीफाई किया, ये जो स्फीयर है ना इट्स इन द बिगर स्फीयर. जो आपके पास बिगर स्फीयर है ना SRX, इसका सबसेट है. इसको आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो. इट्स मतलब इंक्लूजन आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो. इफ यू चूज एनी पॉइंट इन दिस स्फीयर यू विल सी दैट दैट पॉइंट इज आल्सो इन SRX. ओके, सो और ऑब्वियसली ये इस x को एक्चुअली कंटेन कर रहा है. ये स्फीयर x को कंटेन कर रहा है. ये जो स्फीयर है ये x को कंटेन कर रहा है. सो इफ यू वांट टू प्रूव इट, x इज हियर एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस. तो इसके लिए आपको प्रूव करना है डिस्टेंस बिटवीन x एंड a, दैट डिस्टेंस शुड बी लेस देन r1. ये डिस्टेंस r1 से कम होनी चाहिए. ओके, so how do we prove that distance is less than r1? So this distance, okay, let's sit here. Distance between x and a, it should be less than r1. So r1 is the radius of this sphere. r1 lies between r and r/3. Okay,
So we want to calculate this distance, actually that should be less than r1, that should be less than r1. We have this we have r by 3 less than r1 less than r, okay. अब आपको डिस्टेंस चाहिए x और a के दरमियान, that should be less than r1, that should be less than r1. Distance between x and a, it's how do we prove this? Distance between x and a should be less than r1, it should be less than r1. So it's actually here 2r by 3 and 2r by 3, okay. ये हमने चूज किया दिस रैशनल नंबर, ओके. सो मैंने शायद यहाँ गलत लिख दिया ये. सो रैशनल नंबर जो हमने चूज किया ना, इट्स हियर 2r by 3, ओके. r by 3 is less than 2r by 3 और r1 आपने रैशनल नंबर चूज किया which lies between these two real numbers 2r by 3, okay. This is इसको हम फिर से यहाँ पर कर सकते हैं, इट इज नॉट टू डिफिकल्ट. चलिए यहाँ पर डायग्राम थोड़ा बनाना मुश्किल होता है. सो लेट्स टेक दिस टू बी अ बिगर स्फीयर, ओके. दिस पॉइंट एक्स हियर और ये इसका 1/3 रेडियस है और ये 2/3 रेडियस है, ठीक है. 2/3 रेडियस, this is 2/3 radius और फिर this is 2/3, okay. This is r by 3, this is 2r by 3, right, and this is the rational number r lies between okay. So इसके बाद r by 3 जो नंबर है आपका, दैट्स हियर r by 3 जो स्फीयर आपके पास है, दिस कंटेन्स अ पॉइंट ए, ओके. ये पॉइंट ए को कंटेन कर रहा है. सो a is in this distance between a and x is this distance between a and x is, it's less than what? It's less than okay, this is less than r by 3, so which is less than r1, that's r1 तो आपको डिफाइन है ऐसे के ना. so this is straight forward, distance between a and x is less than r1, that's true. अब इसके बाद आपको क्या प्रूव कर, ये जो स्फीयर है जिसका सेंटर a है और रेडियस r1 है, ओके. रेडियस जिसका r1 है, वो जो है जिसका रेडियस r1 है, ओके. ये जो स्फीयर आप यहाँ पर आप ड्रा करोगे जिसका रेडियस अब r1 है, दिस वन रैशनल, जिसका r1 रेडियस है और सेंटर a है, इट शुड बी इन आपको ये प्रूव करना है. ये तो आ गया ना डिस्टेंस बिटवीन x, सो दैट मीन्स योर x इज इन दिस सेट as center at x and radius r1, okay. So it is centered at x and radius r1, okay. Radius इसका r1 है, this point. अब आपको ये देखना कि क्या ये सबसेट है SRX का, तो इसके लिए ओबियसली आपको यहाँ से पॉइंट चूज करना, आपको प्रूव करना वो इसमें है. सो लेट्स चूज अ पॉइंट हियर, लेट्स चूज से y इन दिस स्फीयर as r1 of x. So this means distance between y and x is less than r1, okay. आपको प्रूव करना ये जो y है ये SRX में, that means you want to find the distance between y and x. So we have one more point, that's a का यूज हमें करना है. This is lesser equal distance between a and y plus distance between a and x, okay. So this distance between a and y is in SR1x, okay. y SR1x में है.
So obviously this distance between a and x, it's here it's less than r by 3. So this is less than distance between a and y plus r by 3. I want it to be less than r actually. So what's the distance between a and y? वो important है. Distance between a and y. Where is y? Y is in SR1x. So SR1x जो है ना, SR1x, so distance between a and y, a is here, distance between a and y, that should be less than 2r by 3, I think. That should be less than 2r by 3. What's 2r? 2r is here, okay, 2r is here. So a and y आपने चूज किया SR1x में, ओके, r1 इज हियर, यहाँ से आपने y को चूज किया, जिसकी डिस्टेंस x तक कितनी है, लेस देन r1. इसका मैं यूज करा, डिस्टेंस बिटवीन y एंड x इज लेस देन r1, और डिस्टेंस बिटवीन y एंड x इज लेस देन r1. सो ये जो डिस्टेंस है y एंड x, y is somewhere here. Distance between y and x, distance between y and x, distance between a and y is distance between y and x plus x and a, between y and x, it is ay ax, okay. Distance between a and y, yx, distance between y and x is less than r. This distance a and y plus, it's actually y and a plus a and x, y and a plus a and x. This distance y and a plus a and x, this sum distance, what's this distance? Distance between a and x is less than r by 3, that's clear here. So 2r by 3, okay, r1 is less than 2r by 3, r1 is less than 2r by 3, this is r1, it's less than 2r by 3, so 2r is somewhere here, okay, 2r is somewhere here. Distance between a and y is, it should be less than 2r by 3. I want this to be less than 2r by 3 actually. This should be trivial actually. This should be less than 2r by 3 plus r by 3, okay, that's equal to r. So how do we prove that? So I have to use this actually, distance between y and x is less than r1, r1 is less than 2r by 3, okay, that's clear. Distance between x and y is less than 2r by 3, okay. Distance between a and y क्या होगी, y and x, y and x, okay, and this is a and y, okay. Y and x is less or equal to this distance, and is between a and y, distance between a and y, okay, it's less or equal to this distance, it's obviously greater actually, distance between y and x, a and y, okay, ax plus xy, okay, ax plus xy,
So what's xy is less than 2r by 3? What's ax? Ax is less than r by 3. So this one, this is less than 2r by 3. This is less than 2r by 3. So let me see it again. This is the bigger sphere. Okay, this is the 1/3 and this is 2/3. Okay. This is point x here and this is a point A. So we have chosen a point in SR1 SR1A. okay, SR1A में हमने चूज किया. R1 is here. okay, हमने यहाँ कोई पॉइंट चूज किया y. okay, y हमने कोई पॉइंट चूज किया somewhere here. So we have chosen a point y in SR1. okay, SR1. So this means distance between a and y is less than r1. और मुझे प्रूव करना है y किस में है, मुझे प्रूव करना है y SRX में है. तो इसके लिए मुझे डिस्टेंस निकालनी है y और x के दरमियान. दैट्स लेस आर इक्वल डिस्टेंस बिटवीन y and a प्लस डिस्टेंस बिटवीन a and x. So distance between y and a is less than r1. It's less than r1 plus distance between a and x is less than, it trivial. It is, this is less than r by 3, distance between a and x. okay, so r1 is less than 2r by 3. मुझे वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई थी इसमें? दैट्स इट्स ट्रिवियल एक्चुअली. इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, सो आपको ये प्रूव करना है दिस थिंग. मैं फिर से आपको यहाँ पर ये दिखा दूँ. SR1A शुड बी सबसेट ऑफ SRX है ना. ये SRX का सबसेट होना चाहिए. SRX तो है ही सबसेट G का, हमने ऑलरेडी लिया है. तो आप यहाँ पर कोई पॉइंट चूज कीजिए. लेट्स चूज Y हियर, SR1A. so that means distance between Y and A is less than R1. so what's R1? R1 is a rational number lies between R by 3 and 2R by 3. so it's less than 2R by 3. और आपको प्रूव करना यही y SRX में. so SRX के लिए आपको डिस्टेंस निकालनी है y से लेकर x तक. इट्स लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड a प्लस डिस्टेंस बिटवीन a and x. so distance between y and a here it's less than 2r by 3, less than 2r by 3. now plus distance between a and x. अब आपने a कहाँ पर चूज किया वो हम यहाँ से देखेंगे. a हमने इस स्फीयर से चूज किया और जिसका रेडियस क्या है 2r by 3. इस स्फीयर का रेडियस है 2r by 3. ओके, तो distance between a and x is less than 2r by 3. it's less than 2r by 3. so distance it's less than r by 3, sorry, r by 3. so here it's मैंने फिर से यहाँ गलत किया. it's not 2r, it's r by 3. फर्स्ट स्फीयर जो है वो r by 3 है और इसके बाद जो ये वाला स्फीयर है सेकंड वन, दिस इज 2r by 3. ओके, so that means this y it is in SRX. okay. so therefore SR1A is subset of SRX, which is subset of G. so that proves this theorem completely. okay.